Bismillah, alhamdulillah. This is the second part of Embryology Clincher series, and inshallah, in this lecture, we'll be covering the next segments जो कि contraception से forward है. Next onward हम देखेंगे. So, in our last part, we have covered cell division, gametogenesis, and female reproductive system. ये दो files हम cover कर चुके थे. अब next files की तरफ move करेंगे. So, these series are highly recommended for the MBBS and other students who are going to appear in different exams, चाहे वो FCPS है, प्लैब है, MC है, सबके लिए equally important है. So हम डायरेक्टली जा रहे हैं टेबल्स की तरफ. क्लिंचर जो कि प्रिपेयर्ड है यहाँ पर, अदरवाइज आपको एक कंटेंट कंप्लीट सब्सक्रिप्शन प्लान में भी मिल रहा है. जो स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. जो नहीं कर रहे उनके लिए इस सीरीज़ में हर वो चीज़ बताई जा रही है कि वो इसको इन केस मिस ना कर सकें. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम इस टेबल से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टेबल ऑफ especially contraception. Which contraceptive method provides a physical barrier to sperm, that is condom? Which hormonal contraceptive method is commonly used after childbirth, that is progesterone only pill? याद रखिए ये जो प्रोजेस्टिन ओनली पिल है ये लैक्टेशन में भी रिकमेंडेड है और आफ्टर बर्थ भी रिकमेंडेड है, लेकिन 6 वीक्स के बाद. ये वाली बात है. ठीक है, अगर आप प्लैब की गाइडेंस देखेंगे तो उन्होंने जो फर्स्ट है जिसको आप कह लें यूके मैक UCMEK के नाम से आती है गाइडेंस, तो उनमें ये चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेट की हुई है कि 6 मंथ्स लैक्टेटिंग मदर्स के लिए हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, जो कि कॉमन पिल्स हैं जिसमें बहुत पिल्स आती हैं. लेकिन प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो हैं ये थोड़ी सी सेफर कंसीडर की जाती हैं. नेक्स्ट है विच IUD टाइप इज नॉन हार्मोनल एंड लास्ट अप टू 10 years, that is copper IUD. Next है which emergency contraception can be used up to 5 days after unprotected sex? The answer is copper IUD. Then which fertilization procedure involves cutting the vas deferens in men? तो इसका आंसर विजेक्टमी, ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है. Then which hormonal contraceptive method thickens cervical mucus and inhibits ovulation? The answer is COCP या COCB कहते हैं इसको, combined oral contraceptive. What is the mechanism of action of emergency contraceptive? That is delays ovulation. Then which contraceptive method is typically used for 3-month interval? That is Depo-Provera injection. And this is very important contraception. Depo-Provera is considered with a high Pearl index. Pearl index का मतलब होता है कि इसका फेलियर रेट बहुत कम है. इवन ट्यूबल लाइगेशन जो फीमेल्स में की जाती है उससे भी ज़्यादा है. तो इसका मतलब ये है, जो आगे इसका MCQ भी आप देख रहे हैं ट्यूबल लाइगेशन का, इसका मतलब ये है Depo-Provera stands on the top of all इवेंट्स जो कॉन्ट्रासेप्शन में हो रहे होते हैं. तो उसके लिए लिहाज से सर्जरी से बेहतर है कि डीपो प्रोवेरा इस्तेमाल की जाए, उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है और उसमें फेलियर रेट कम होता है. देन है विच method involves cutting, tying and sealing of the fallopian tube, that is tubal ligation. Which contraceptive method is available as patch, that is contraceptive patch. So the next topic is infertility और इसमें सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल से आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर दी हुई हैं, आप इधर से कवर कर सकते हैं. निमोनिक्स के साथ सब कुछ अवेलेबल है विद द टेबल्स. तो हम मूव करेंगे क्लिंचर की तरफ. द फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी इज ओलिगोस्पर्मिया. तो जब भी पेशेंट आएगा तो आपने सबसे पहले स्पर्म काउंट उसका चेक करना है. स्पर्म एनालिसिस कहा जाता है इसमें. उसमें स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और भी बड़े ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो हम देखते हैं. Then which assisted reproductive technique involves sperm directly placed into uterus? That is very common, that is intrauterine insemination या intrauterine fertilization भी कहते हैं इसको. Which factor significantly influence IVF success rate? That is maternal age. Most common genetic cause of male infertility is uh, client factor. This is genetic cause. Remember it कि ये genetic cause है. Then a primary cause of female infertility in POCs जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उसमें एनोवुलेशन होती है और इसके साथ और भी काफ़ी सिम्टम्स होती है, लेकिन ये वैसे ओवरऑल सेकंड नंबर पे आती है. जेनेटिक काज में डाउन सिंड्रोम फर्स्ट नंबर पर है फीमेल इनफर्टिलिटी की और सेकंड नंबर पे PCOS है. Then the process of fertilization outside the body is called in vitro fertilization. Major risk of
multiple embryos in ART is the multiple birth. Then the main hormone treatment for ovarian stimulation in IVF is FSH. Embryo transfer typically occurs on which day after fertilization, day 3 or day 5 is the answer. Then next one is the cleavage blastocyst formation embryology से, और ये सारी यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको स्किप करूँगा, और ये मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इनको लेना है वो अलग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये पूरा प्लान भी वो यहाँ से ले सकते हैं। So we will be moving here. So what is the process of rapid cell division after fertilization? The answer is cleavage. The inner mass of blastocyst forms which part of embryology is the embryo. Then what is the technique used for to generate genetically identical organism is reproductive cloning. Which phase of villi formation involves the development of blood vessel is tertiary villi. ये important है और इसकी diagram भी है. I hope so मैं दिखा पाऊंगा आपको. Which abnormality is the most common cause of spontaneous abortion? That is chromosomal abnormality. At what stage of cleavage does the morula form? That is 8 cell stage. Then which structure forms the placenta from blastocyst? That is trophoblast. Which technique involves the creation of tissues and or organ for therapy? That is therapeutic cloning. What is the first structure to form after fertilization is zygote. What is the process called when cells begin to tightly adhere to morula? That is compaction. What type of stem cells are derived from the inner cell mass of the blastocyst? That is embryonic stem cells. At which stage does the blastocyst implant into the uterine wall? The answer is end of day 5. What is the key feature of secondary villi formation? The answer is mesoderm core formation. What is the term for the process by which an embryo develops into morula? That is cleavage. Then the question is, what is the embryo? What part of embryo is responsible for forming the fetal membranes? The answer is inner cell mass. तो यहाँ पर ये सारी जो हमने ऊपर चीज़ें देखी उनके एटलस अवेलेबल हैं, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है, साथ में डायग्राम्स हैं और काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट है। तो हम नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं, डेट इज़ वीक 2 एंड यूट्रोप्लेसेंटल फॉर्मेशन। सो इसमें हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं फर्स्ट टेबल इज फ्रॉम द इम्प्लांटेशन ऑफ वीक 2 एंड यूट्रोप्लेसेंटल एम्ब्रियोलॉजी में देखते हैं क्या है हमारे पास। Okay, the table is here. The endometrium at implantation is called decidua. The layer of trophoblast that invades endometrium is syncytiotrophoblastic. Site of most ectopic pregnancy is ampulla of fallopian tube. So ये मैंने आपको already एक MCQ बताया था, ये उसी से relevant है. Most commonest type of molar pregnancy is complete mole. Fertilization is incomplete mole results in diploid karyotype. Structure formed between epiblast and trophoblast is amniotic cavity. In initial site of blood formation in embryo is umbilical vesicle या yolk sac भी कहते हैं इसको. Layers of chorionic sac is cytotrophoblast and syncytotrophoblast. Cyto का मतलब cells होते हैं. Or what first maternal blood flow in placenta is via spiral arteries. Okay, the diagrams are here. तो आप इधर से इन diagrams को भी कर सकते हैं, and then we will move towards the second part of this file. I think वो नहीं है, एक ही इसमें important table था जो आपको मैंने dictate कर दिया. So we will be moving the next file. The next is gastrulation plus notochord. तो इसमें हम देखते हैं कि important clinchers कौन से हैं, उनको भी देख लेंगे और cover कर लेंगे. Okay, the first section is gastrulation. तो इसमें हमारे पास table available है. These are the important mnemonics. अगर किसी को चाहिए तो वो अलग से भी ले सकता है. So हम move कर रहे हैं यहाँ पर. The thickened epiblast structure during third week is primitive streak. Fate of primitive streak after fourth week is regression. Failure of primitive streak regression causes sacrococcygeal teratoma. Tissues derived from migrating epiblast cells endoderm. Marker for mesodermal induction is nodal. Molecule reducing E-cadherin for cell migration is F
G-F-8 ये वाले वो एमसीक्यूज हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स के गलत ही होते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे मैंने बड़े ध्यान से अच्छे तरीके से मेंशन कर दिए कि इनको एटलीस्ट आप अच्छे से याद कर लें, और इनकी चूंकि चीज़ें ऐसी हैं कि आपको काफ़ी हद तक रिटेन करनी पड़ेंगी। इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े कम हैं, आपको रिटेन ज़्यादा करना पड़ता है। तो प्रिमिटिव नोड dorsalizes mesoderm by inhibiting BMP4, that is coartin, pluripotent cells forming all three germ layers. Sacrococcygeal teratoma composition induces primitive streak and mesoderm formation is TGF-beta nodal pathway है. Common clinical condition arising from remnant primitive streak is teratoma. Then the next part is the formation of the notochord, और इसमें हम मूव करते हैं डायरेक्टली टेबल की तरफ. Communication between amniotic cavity and yolk sac is neuroenteric canal. Next is embryological remnant forming nucleus pulposus is notochord. ये वाला एमसीक्यू एफसीपीएस में आया हुआ है, काफी दफा रिपीट हुआ है. Protein inducing neural plate and somoid differentiation is sonic hedgehog. Then condition caused by insufficient mesodermic caudal region is syringomelia. Or next है left right asymmetry is regulated by nodal and lefty one. Structures formed after detachment of notochordal plate is notochord. Failure of midline separation due to SHH mutation is holoprosencephaly. Then abnormal signaling leading to organ situs reversal is situs inversus. Then chorionic villi containing blood vessels जो repeat हो रहा है MCQ, that is tertiary villi. After that, we have abnormal persistence of neuroenteric canal is spinal dermal sinus tract. Okay, this is the important atlas here we have. I think इसके अलावा इस फाइल में क्लिंचर नहीं है, तो हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. Okay, for the next part we will be covering from the sixth file. यहाँ तक कि हमारी फाइल आज की कंप्लीट होती है. वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर को, ताकि ये ज़्यादा लेंथी ना बन जाए आपके लिए. इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.